Karnataka is the fourth largest automobile producing state in India, contributing 8.5% to the nation's vehicle production. The state also has the highest number of EV charging stations, boasting an impressive 5,765 public stations. We were the first to introduce an EV policy in 2017 and will soon unveil a clean mobility policy at our upcoming Global Investors Meet. Backed by our progressive policies, world-class infrastructure and a skilled workforce, Karnataka is paving the way for growth in both traditional and EV sectors. Join us at Invest Karnataka 2025 and be a driving force in the future of automotive and EV innovation. Good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome to you on this last working session for the week. It's a very painful Friday that Dalal Street is experiencing, primarily on two accounts. The threat of reciprocal tariffs has hit the backbone of the market. We've seen massive bouts of correction that have come in, and let me just start with two. The small cap and the mid cap index. The PCR will fire the Nifty small cap index, which has corrected more than 4% today, and that fall is now extended to about 22% from its all-time high. I'll request the PCR to fire the daily long-term chart of the Nifty small cap index, and what you will see is a fairly interesting but a very painful development that will be in front of you as far as the screen is concerned. What you see is a low of June 4th, which is there on the Nifty small cap index, as also on the Nifty mid cap index. The small cap index has corrected 22.2% from its peak and is now in bear territory, and ditto the mid cap index. The low that you see today was last seen on election day results. They have a very strong linkage to market sentiment. That was the day when the market took a very strong beating but recovered very sharply. From then on, if you look at the Nifty mid cap index, it went up all the way to an all-time high somewhere in September, and from then you have a correction that has set in. Let me just put the mid cap 100 index in front of you. Yes, this is there. Just let me get the daily numbers. Yes, the all time was hit on 25th of September, which was somewhere like 60,991. Let's just take it as 61,000, which we saw for a very brief while. From 61,000, the index has corrected to 49,794. It's a total correction of about 19% on the Nifty mid cap index, and this level was last seen on 5th of June. A day before, which was 4th, which was the day of the results, the low was 47,246. So now this is what the market is most probably likely to test. It's still 2,000 points away, but in the same breath, look at the Nifty small cap index, 100 index, that's right there in front of you. The most recent high that we saw was on 12th of December, when the index peaked at 19,597. It's almost 19,716, and from then on it is corrected all the way down to today's low, which is 15,254. The low on 4th of June was 14,966. So it's almost there, and this fall from 12th of December till now is actually a 22.2% fall. So we are in bear territory as far as the small caps are concerned. Traditionally, markets have reversed from these levels, but the level of selling today is phenomenal. Let's look at the Nifty now. I started with the small caps and mid caps because those are the pain points that the market is discussing in great detail, whether it's fund managers, whether it's equity strategists, whether it's simple investors, or whether it's viewers like you and me. Today's low in the Nifty, ladies and gentlemen, is 22,000
774. This was last seen on 7th of June. The low that has been tested by the small cap and the mid cap index of 4th June for the Nifty stands at 21,281. So, that is still about 1700 points away. So, if the Nifty were to test the June 4th low, then you know how much of that distance is yet to be covered. 928 points for this one and about 800 points more. So, that is theoretically the pain left in the market. Although we have tested this 22,800 level several times in the past and the Nifty has bounced back. It has bounced back intraday as well. Let us hope 22,800 is the most recent base that we are looking at. Raghvendra Singh, market expert, joins us on the show. Namaste Raghvendra ji, a very warm welcome. For you, things are in black and white. A 4% drop on the small cap and the mid cap index, terrible advance decline ratio and very heavy selling pressure. How do you analyze sentiment today? सर जी वेरी गुड आफ्टरनून। सर जी बस एक दो चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यू नो हाउ मेनी एनालिस्ट्स आर देयर इन द इंडिया इन यू नो लास्ट 4 to 5 years। आई थिंक ऑलमोस्ट 1700 आर द ये जो एनालिस्ट है ना, ये नंबर्स आए हैं, ये एनालिस्ट कह लो या फंड मैनेजर आप कह लो उनको, उसमें से 1650 ऐसे एनालिस्ट हैं जो पिछले 3-4 या 4 साल में आए हुए, 3-4 सालों में आए हैं। That means 90% of the people who are into this stock market, who are handling the portfolio, mutual fund and maybe other institutional fund, उन्होंने कभी अभी तक कोई मंदी देखी नहीं है मार्केट में, न 2008 की, न 2020 की, न 2017 में जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तब ब्रेक्जिट, तो किसी ने देखा नहीं है, तो किसी को मालूम नहीं था कि बाजार में मंदी नाम की भी चीज होती है। तो अभी तक क्या था सिनारियो कि हम निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिरता था और 400 पॉइंट ऊपर आता था। अभी वो बिल्कुल उल्टा हो चुका है। तो अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा कि बाजार में हो क्या रहा है। ये मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, आपके सारे डेटा मैंने देखे, मिड कैप स्मॉल आपने बोला 60,000 से मिड कैप इंडेक्स जो है अभी 50,000 के रेंज में है। ओनली 22% और 20% हैज बीन करेक्टेड। लेकिन वो जब ऊपर गया था 20,000 से 60,000, वो 300% की ग्रोथ थी वहां पे। बट वो एक टाइम ऐसा आएगा जब मार्केट जो है वो वैल्यूएशन को भी रिस्पेक्ट देगा। तो वैल्यूएशन मिड कैप स्मॉल कैप या जो भी आप कह लीजिए, इट वाज एक्सेजरेट, और मुझे लगता है कि उसी का असर है कि आज बाजार जो है पिछले जो 4-5 महीने से नीचे है, कि मार्केट जो है उन लोगों को रिस्पेक्ट दे रहा है जो वैल्यूएशन पे डील करते थे, वैल्यूएशन में जो ट्रेड करते थे। आप देखिए नंबर ऑफ एसआईपी हैज बीन विथड्रॉन इन लास्ट 2 months इज मोर देन 60 lakhs, विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर। क्योंकि हर समय हमारे दिमाग में या हर जगह हमको ये बताया गया म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी सही है। देखिए एवरीथिंग इज राइट, बट कभी कोई फंड मैनेजर आकर के ये नहीं बोलता कि सर आप बाजार बहुत पीक पे है, बाजार में वैल्यूएशन महंगे हैं, अभी आप आकर के यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो। कोई नहीं बोलता, किसी की हिम्मत नहीं बोलने की। क्यों? क्योंकि अगले दिन उनका एसआईपी विड्रॉ स्टार्ट हो जाएगा। अब जब बाजार 20-30% नीचे आ चुका है, यहाँ पे एवरीवन इज सेइंग कि यार बाजार में कॉशियस रहिए। अरे जब निफ्टी 26,000 पे था तो उस टाइम क्यों नहीं बोला आपने कि आप कॉशियस रहिए? तो सर ये चीजें हैं, अभी इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आ रहा, रिटेल इन्वेस्टर्स को ये चीजें ऐसी हैं कि जो आप जब बाजार में एक्सपीरियंस करेंगे, आपने पिछले 20 साल से बाजार देखा है, हमने भी देखा है, तो पिछले 20 सालों में सर हर एक लेवल को हमने क्रॉस करके, वो जो है ना आपका क्या बोलते हैं इंग्लिश चैनल, वो हमने इंग्लिश चैनल के हर एक बैरियर को क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और लोगों को लगता है कि बहुत ईजी है मार्केट में ट्रेड करना, पैसा बनाना। तो अभी स्टोरी वैसी ही हो रही है, और मुझे लगता है कि ये भी पेन अभी है, कुछ दिन और रहने वाला है पेन, कुछ दिन और पेन होगा। जब मैक्सिमम विड्रॉ होने लगेंगे तो मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा सा वहां पे रुकेगा, फिर एक रिवर्सल भी आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लंबी अवधि में पैसा हमेशा बनता है, लेकिन हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि बाजार में जब बियर फेज आता है तो अच्छे लोगों की जो है सर हवा निकल जाती है बाजार से। जी, लेट्स लुक एट द निफ्टी फार्मा इंडेक्स। इट इज my apologies, the Nifty IT index. This is 3 plus 4, 7 days of fall on the Nifty IT index, and what you see is a low of 18th November. So please look at the two different parts of the market. One that has showing a mild correction like the Nifty Pharma index, the Nifty IT index. Yes, stocks have fallen in them, but they are, the fall in the IT stocks and pharma stocks is far less
than what you see in mid caps and small caps and the main Nifty also. That's mainly because a weak rupee, we are seeing rupee at a record low, is extremely beneficial for the IT stocks as well as pharma companies, because large percentages of their revenues come from the US geography. Let's look at the Nifty Pharma index. What you see is a level that was last seen in July of 2024. So this of course is also at a 6-7 month low, but the pain points that we see in mid caps, in small caps and on the Nifty are not to that extent as you see in the Nifty Pharma and the Nifty IT index. Let's look at the Nifty Bank. It's also quite badly off, but the most recent low that was seen on January 27th is yet to be tested, and it's very far off. It's about 2000 points lower than what you see today. Anyways, these are the way indices are working. Lots of pain point. The only thing I can say which is towards the positive side is the fact that volumes are low. So your FI net number today could be somewhere in the vicinity of 1800 to 2200 crore rupees as far as their net sales are concerned. Raghvendra ji, to your estimate, what would you do for Monday? There's no point taking a BTST or STBT call, but if you have something interesting on the charts to share, then please do let us know. As far as pharma stock is concerned, if you can read out the pharma chart, pharma index, there's a strong base around 20,800 levels. Now the pharma index is hovering around this level since morning. So I believe there is a smart bounce back possible on Monday in the pharma. So I'm expecting some bounce back in Granules, Sun Pharma, Aurobindo Pharma on the Monday. So I'm betting on pharma stocks for Monday. I'm buying these two stocks, three stocks for Monday. So you're buying Aurobindo Pharma and what all? Granules, Aurobindo Pharma and Sun Pharma. Okay. So basically it's a pure defensive play that is there in your mind, which is to get into counters which probably get a large percentage of their revenue coming in from the US markets. Also please remember, it's not as if that pharma has not been beaten black and blue. They have also been seeing a lot of profit bookings simply because Mr. Trump till about 2 weeks ago said those who don't produce in the United States but sell their products to us, they need to put in a factory or face a very high tariff barrier. Raghvendra ji, how much of this intense pain that we are seeing in the market is because of reciprocal tariffs that Mr. Trump has signed on for not only India but for a large part of the Committee of Nations? Sadly, it is not a good sign at all, and even the market is sensing that, because reciprocal tariff is not good, because the most of the manufacturing which we export is the pharma. So I think pharma जितने stocks हैं जो भी हम बाहर भेजते हैं, सबसे ज़्यादा export इंडिया करता है US को. इसके अलावा metals, इसके अलावा रेलवे के जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं, रेलवे के जो बोगीज वगैरह जो बनाते हैं, तो ये बाजार इस चीज को सेंस कर रहा है कि आने वाले टाइम में ये चीजें बहुत खराब हो सकती हैं. तो मेरे हिसाब से ये आप देखिए बाजार में चाहे आज या कल जब भी इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये उसका बाजार सेंस करके आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप जो भी बाहर चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो कंपनियां जो एक्सपोर्टर है, नेट एक्सपोर्टर है, उनको प्रॉब्लम हो रहा है. देखो एक तो हमारा करेंसी वॉर चालू है, आप कुछ भी कह लीजिए, हम ऑटो में अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे. अगर अमेरिका ने बहुत ज्यादा हमारे पे टैरिफ लगा दिया तो हमारी स्टील की प्राइस बढ़ने वाली है, हमारी सीमेंट की प्राइस बढ़ने वाली है, हमारी कोल की प्राइस बढ़ने वाली है. वो इन्फ्लेशन का जो खतरा है वो बाजार कहीं ना कहीं सेंस कर रहा है. तो मेरे हिसाब से जो है ये बाजार अभी मुझे लग रहा है कि जब तक ये चीजें क्लियर आउट ना हो जाए कि क्या क्या और चीजें इम्पोज हो सकती हैं इंडिया के ऊपर, मुझे लगता है कि बाजार में अभी फिलहाल जो है ऐसा कुछ भी अग्रेसिव बाई करने की जरूरत नहीं है जहां पे कि इसका इम्पैक्ट और जो है हमारे ऊपर दुगना असर कर सकता है, उसका इम्पैक्ट दिखेगा हमारे ऊपर. जी. So ladies and gentlemen, this is a very painful juncture for Indian markets, which are not only grappling with overvaluation in some parts, but this news of reciprocal tariffs coming into impact
over the next 6 months or so has to some extent broken the back of mid caps and small caps. Very, very high selling pressure coming in today. Let's hope that the worst is behind us, but it looks as if there is more pain coming ahead in the Indian markets, especially in overvalued zones where a large part of smalls and mids find themselves in. So that's how it is as far as markets are concerned. 3:15, 15 minutes have been there. Let's look at how the Nifty was 3 or 4 days away. When you look at last Friday, it was 7th of February. Let's look at the Bank Nifty chart. The high for the Bank Nifty on 7th of February was 50,641. From then on, we've hit 48,781. That's easily 1200 points lost on the Nifty Bank alone. Let's look at the Nifty index. It's been falling continuously for 4 plus 4, 8 days. On 5th of February, which was Wednesday, the Nifty was at a high of 23,800. On 7th, the high was 23,700. So from 23,700, you have 22,700 today, almost 784. So that's a 1,000-point fall in the last 5 trading sessions. And everybody has been impacted, whether it's metals, whether it's IT, whether it's pharma, whether it's consumer durables, whether it's capital goods companies, real estate, all of them have taken it on the chin. Look at the chart of Tata Motors. Let me just point out in the last 5 sessions, the biggest losers on the Nifty. That will give you an idea as to how the market is anticipating Mr. Trump's changes that he is sort of coming up with. In the last 1 week, ladies and gentlemen, the top loser on the Nifty is Eicher Motors. This is when third quarter earnings was very good. Why is Eicher Motors the top loser? That's for 2 reasons. Its US competitor Harley Davidson, for whatever reasons, whether it's higher tariffs or higher costs, has been unable to sell lots of bikes in India. And Mr. Trump in particular has raised this issue of higher tariffs on high-end bikes such as Harley Davidson, not only with Mr. Modi, but in many other public fora. BEL has lost 10% in the last 5 trading sessions. Hero Motors, another two-wheeler, down 9.6%, M&M 8%, Apollo Hospitals 7.8%, Power Grid 7.7%. Remember, Apollo Hospitals came up with a great set of numbers. The earnings at Mahindra & Mahindra were phenomenal. Eicher Motors was also a very big outperformer. All 3 or all 4 of them may have also fallen partly because of profit booking, but the overall theme in the market is that you will pay a price for the higher tariffs that India charges, and the markets are readjusting their psychology. I am also requesting the PCI to also please fire the rupee chart, the rupee versus dollar. Incessant record lows on INR versus USD is also one of the reasons why you see this very heavy selling pressure that is coming in from foreign institutional investors. That, ladies and gentlemen, is the broad thrust of the market. Let's again revisit the small cap and the mid cap space. I'd like to point out the top losers in today's small cap index, which is down about 4%. Let me give you an interesting data. Yesterday, Natco Pharma fell 20%. It's down 9% again today. Manappuram Finance, numbers that were not happy with the market was not very happy with them, lost about 4% yesterday, down about 9.3% today. Let me give you some very interesting data on the market map of the small cap index. It will give you an estimate as to the market's anger. There are 25 stocks in the small cap index, the small cap 100 index, which have fallen more than 5%. There are 38 stocks that have fallen between 5 and 3%,
and there are 3 stocks that have fallen between 1 and 3%, 34 stocks that have fallen between 0 and 3%. There are only 3 gainers on the small cap 100 index. They are HBL Engines, Redington and Triveni Turbine. So, you can well imagine the intensity of the selling pressure. Look at the midcap 100 index. 11 stocks have fallen more than 5%, 29 stocks have fallen between 3 and 5%, and 50 stocks have fallen between 0 and 3%. Let us look at the 11 top losers. Familiar names: Kalyan Jewellers down 7.5%, Bharat Dynamics down 5.6%, RVNL down 5.6%, Delivery down 5.6%, Ireda down 5.5%, Idea Cellular down 5%. Let us look at the top losers in the small cap index. I thought Deepak Nitrite was there, just give me a moment. It's Kalpataru Power 10% lower, Natco, Swan Energy, Laurus Labs, Mannapuram Credit Access down between 8 and 10%. That, ladies and gentlemen, is the intensity and the pain of the sell-off. Raghavendra ji, anything that you are observing? You check out the open interest of Nifty and Bank Nifty in this call. The open interest is very huge, and the 23,000 call writers are aggressively coming. So I think 23,000 is looking very difficult to break in the next week. अगर ये break करता है तो short cover भी बहुत अच्छे से आएगी. Downside I'm expecting 22,800 to take immediate support because there is a huge put writing at that level. But 22,800 आज एक बार break किया था. बट मुझे लगता है कि वो इमीडिएट मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जो है बट मुझे लगता है शायद हो सकता है अगले दिन टूट जाए बिकॉज अग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रही है. आप देखिए तो मेरे हिसाब से जो ये अग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रही है तो हो सकता है कि अगले हफ्ते में बाजार एक बार और डिप लोअर, मुझे लगता है जो हमारा प्रीवियस मंथ का लो था उसके नीचे भी एक बार जाने की बाजार जो कोशिश कर सकता है. सो ओवरऑल मेरे लिए अभी बाजार में जो है सेल और राइज का बाजार है और जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाती है सेल करिए, स्टॉप लॉस के साथ रहिए और अभी अपने इन्वेस्टमेंट को पेशेंटली होल्ड कीजिए. बाजार से भागने की जरूरत नहीं है, बाजार है नीचे ऊपर होता रहता है लेकिन थोड़ा अभी ये बैड टाइम है. बैड टाइम में वी हैव टू बी पेशेंट एंड वी हैव टू होल्ड आवर नर्व्स वेरी स्ट्रांगली क्योंकि इस टाइम पे हमसे गलतियां बहुत होती हैं कि हम बेच के निकल जाएं या फिर ऐसा कुछ करें. तो बेटर है वेट एंड वॉच. चलिए इंतजार करते हैं और नजरें गड़ाए रखते हैं बाजार पर. ये राघवेंद्र जी की राय है. अब कुछ काम की बात हो जाए. वैलेंटाइन डे है आज, बताइए क्या प्लान है शाम का? इसलिए सर अभी तो बाजार ने आज वैलेंटाइन डे बना दिया है. आप देखिए निफ्टी के 50 स्टॉक में से केवल 3 ऐसे या 4 ऐसे स्टॉक हैं. एक आप ले लीजिए शायद नेस्ले, आईटीसी और फार्मा में एक आधा कोई होगा ऊपर तो होगा, तो बाकी कोई स्टॉक तो ऊपर है नहीं. तो वैलेंटाइन डे तो वैसे भी सबका रेड हो चुका है और अभी शाम को देखते हैं फैमिली के साथ जाएंगे वाइफ को लेकर के डिनर के लिए. तो हो सकता है जोमेटो स्विगी का थोड़ा सा शेयर अगर मंडे को ऊपर आ जाए. चलिए चलिए अच्छा है, थोड़ा इकोनॉमी में पैसा खर्च करेंगे तो घूम फिर के स्टॉक के जरिए आपके पास वापस आ ही जाएगा राघवेंद्र जी. अच्छा आप ये जो बाजार में एक मुहिम सी चल रही है कि भाई स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में सिप बंद कर दीजिए, बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं. आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए सर जी, स्मॉल कैप मिड कैप में ये फॉल लाजमी था. ऐसा नहीं है कि ये सिप बंद कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. आज आप एक सिप बंद करोगे, कल 4 सिप कोई और कंपनी लेके आ जाएगी, आप फिर वहां पे करोगे. तो मिड कैप स्मॉल कैप में ये पिछले 20 सालों से रिस्क हमेशा रहता है. तो इसीलिए मैं इन्वेस्टर्स को बार बार कहता भी था कि प्रॉफिट अपना साइड में लेते रहिए. थोड़ा बहुत 20-20% भी अगर आप लेके अगर आप साइड में हट गए होते या स्टॉप लॉस लगाए होते तो आज हमारे पास ये नौबत नहीं आती कि 50% हमारा स्टॉक नीचे होता और हम यहाँ पे खड़े होते. तो मेरे हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप में एसआईपी बंद करने की जरूरत नहीं है. अगर आप इसको और बढ़ा सकते हैं या फिर अगर आप रोक सकते हैं तो रुके रहिए, लेकिन अगर आप और बढ़ा सकते हैं तो वेट कीजिए. ये मंथ एंड तक आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए मिड कैप स्मॉल कैप में. राघवेंद्र जी, कुछ खरीदारी आप खुद अपने पोर्टफोलियो के लिए कर रहे हो? अगर पुट्स भी ले रहे हो तो उसका भी जरिया कीजिए, उसका भी जिक्र कीजिए. बिल्कुल बिल्कुल सर जी, मैं इस समय जो है
मैसिव बियर स्प्रेड बना रहा हूँ और सिंथेटिक ट्रेड ले रहे हैं हम। तो सिंथेटिक ट्रेड में हम निफ्टी बेचते हैं और निफ्टी के साथ कॉल बाई करते हैं। तो मेरा जो वहां पे रिस्क है वो रिस्क मेरा मिटिगेट हो जाता है बिकॉज ऑफ मैंने कॉल बाई किया हुआ है। तो मेरे लिए अभी ये जो बाजार है इसमें सबसे बेस्ट ट्रेड है आपको करने के लिए, सिंथेटिक ट्रेड करिए आप। तो सिंथेटिक ट्रेड आप निफ्टी स्टॉक्स में एटलीस्ट आपका रिस्क जो है वो मिटिगेट होगा, आपका लॉस बहुत कम होगा, प्रॉफिट के लिए आपका चांसेस रहेंगे। तो निफ्टी बेचिए, निफ्टी बेच करके 23,000 की कॉल बाई करिए। अभी निफ्टी जो है अभी चल रहा है 22,925 950, यहाँ निफ्टी को बेच सकते हैं। और बैंक निफ्टी को अगर बेचना चाहें तो बैंक निफ्टी में बेचिए और साथ में आप कॉल बाई कीजिए। ये जो आप इतनी जानकारी दे रहे थे कि मार्केट में हमेशा बने रहना चाहिए और लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए, ये मौके अच्छे हैं, स्टॉक वगैरह नहीं ले रहे आप कुछ? स्टॉक में साहिल जी मैंने 2 स्टॉक आज बाई किया है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, किरी इंडस्ट्री बहुत हाथ से छूट गया था, फिर से दोबारा आज बाई किया। एक्सिको आप देखिए, टूर्स एंड ट्रेवल्स की कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, 144-140 रुपए का स्टॉक है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जेनेसिस जैसे मैंने कई बार चैनल पे शेयर किया था, ये स्टॉक अभी 700-800 रुपए के रेंज में 1200 रुपए से नीचे आ रहा है। नेटवर्क फार्मा जैसे आपने बोला कि 30% नीचे आ चुका है। सैल जी मैंने कल भी बाई किया था थोड़ा सा और आज भी बाई किया है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा इसका बिजनेस मॉडल है। तो मेरे हिसाब से ये सब कंपनियां जो मैं एड ऑन कर रहा हूँ मिड कैप स्मॉल कैप में। जी, तो जेनेसिस इंटरनेशनल, किरी डाइज और नैल्को, ये 3 स्टॉक्स की चर्चा करी आपने राघवेंद्र जी? इसमें मैंने आपको बोला एक एक्सिको बाई करने की, नैल्को नहीं, एक्सिको जो है टूर्स एंड ट्रेवल्स में काम करती कंपनी, टूर्स और ट्रेवल्स। एक्सिको एक गुड़गांव बेस्ड कंपनी है जो अभी लिस्ट हुई थी। कोशिश करते हैं उसका स्टॉक प्राइस आपको दिखाने के लिए। IXIGO, अगर हमारे पीसीआर में उस स्टॉक को फायर किया जाए, मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, चलिए अपनी तरफ से बता देता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सिको 143। और जाहिर तौर पर ये सारी स्टॉक्स जो हैं ये अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी करेक्ट कर चुके हैं। ख़ासकर एक्सिको आपने लिस्टिंग के 2 दिन बाद, लिस्टिंग के 1 दिन बाद का जो हाई देखा था वो आज तक नहीं आया। 197 का ऑल टाइम हाई है और अभी 10 एक दिन पहले ये 119 रुपये पे मिल रही थी अपने आईपीओ के लिस्टिंग प्राइस से नीचे। तो देवियों सज्जनों, बाजार चाहे वो भारतीय हों चाहे विदेशी हों, आपको सीख बहुत अच्छी देते हैं। नुकसान जब कराते हैं तो कुछ सिखा के जाते हैं और उस सीख से हमें सीख लेनी चाहिए। ऐसा ना हो अगली बार ओवर वैल्यूएशन का दौर निकले और आप सब घर में जो फिक्स डिपॉजिट है वो तोड़ के लगा दें। सोचिए समझिए। बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आपको सिप्स बंद कर देने चाहिए। करीब 27-28 साल मुझे भी हो गए बाज़ार में। मेरे ख्याल से इससे बड़ा गुनाह कोई ना होगा। आपकी वित्तीय हालात और स्थिति में गिरते बाज़ार में एक सिप लगाना अति आवश्यक है। और मैं खुद कोशिश करूंगा कि एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप ETF खरीदूं। इसमें लॉजिक ये है कि जो ETF डिज़ाइन करता है या जो फंड मैनेज करता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि आपके ETF में या आपके फंड में वो अच्छे शेयर लाए। और 3-4 साल के दायरे में, 2 साल के दायरे में आपको दिखता है कि जो आपने इस परेशानी में सिप लगाया था, सबसे अच्छा रिटर्न आपको वही सिप देता है उसी महीने का। लगातार 5 महीने से देवियों सज्जनों हम इस दर्द के दायरे से गुजर रहे हैं। यह आग का दरिया है, इसमें तैर के ही जाना है। और आपको ज़रूर कठिनाई अनुभव हो रही होगी। पोर्टफोलियो में रोज़ एक गहरा लाल निशान होता है। अब क्या कीजिए, ये ज़िंदगी का सफ़र है और इसको वैसे ही निकालना है। शुक्रवार का दिन है और ख़ासकर वैलेंटाइन डे है। अब बाज़ार की परेशानियों को लगाइए ताला, शाम को अच्छी तरीके से घूम के आइए,
वीकेंड पे ठंडे दिमाग से पोर्टफोलियो पे नज़र डालिए और फिर आगे कदम उठाइए। जैसे 4 साल का हमने बुल मार्केट देखा है, वैसे कुछ समय का बेयर मार्केट भी चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाज़ार ख़त्म हो गए। ये वही समय है जब आपको दर्शाता है इंसान और कि जो पेड़ हैं वो धरती पर ही उगते हैं, हवा में नहीं। और ये वही समय है जब कभी भी धरती ख़त्म नहीं होती, चलती रहती है। ऐसे ही बाज़ार है, यही हमने सीखा है पिछले 35 साल में, 30 साल में, और यही तजुर्बा आपको आगे काम करता हुआ दिखेगा कि बुरा समय और अच्छे स्टॉक प्राइसेस साथ साथ नहीं आते। With that, ladies and gentlemen, we'll call it a day as far as the markets are concerned. A very, very painful day for markets. 22,900 on the Nifty, 134 points lower. The mid caps and the small caps have been taken out to the cleaners. 3 percentage point fall, 4 percentage point fall on mids and smalls. They have retested June 4th lows. This is a very, very crucial part of the market journey. June 4th was a day when the election results were announced for national elections. The market gave a knee jerk. From that knee jerk, it appreciated very much, and over the last 5 months, 3 months, 4 months, depending upon which index you see, it has retraced that journey. Is the correction over? Well, mostly the large part is. This is a capitulation phase that is happening. 3-4 percentage point falls are synonymous with capitulation. Will the market start rising from Monday? Only time will tell. Whether it will consolidate at this range, yes. Let's hope that sanity prevails, let's hope that common sense prevails, and let's hope that good times return again. With that, ladies and gentlemen, a very happy Valentine's Day to you all. Enjoy the weekend and enjoy the evening. Thank you so much for watching. Karnataka has established itself as the leading hub for electronic system design and manufacturing in India, contributing 10% to the nation's electronics output. We are also home to 400 plus MNCs with global R&D centers. With over 100 fabulous chip design houses and 40% national share in electronic design, Karnataka stands as a prominent hub for chip innovation in India. Invest Karnataka 2025 will bring more global players to benefit from the state's strong and tech-enabled ecosystem. A warm embrace, Great to see you again. a tight handshake, We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. an introduction with Team Trump 2.0. This was the beginning of the crucial Narendra Modi-Donald Trump bilateral. At the back of trade and tariff tension